Hello students, we are doing lesson 11, that is our solar system, and in this lesson we have learned about all the planets of our solar system, and we are discussing about the satellites. So as we have discussed that satellites is a small objects that revolves around a much larger object, and we usually talk of the satellites of the planets in the solar family. So we have two types of satellites, that is natural satellites and artificial satellite. So we have discussed about the natural satellites. So natural satellites, celestial bodies which revolve around the planet are known as natural satellites of that planet. So celestial bodies जो planet के चारों ओर revolve करती है, that is a satellite. So our Earth has only one natural satellite, that is the moon, and other planets of our solar system have more than one natural satellites. As you can see here in the picture, the natural satellites of Jupiter, it has many moons, or you can say natural satellites. So then we have discussed about the moon, that the moon, our nearest neighbor in space, is a natural satellite of the Earth. So our moon is the natural satellite of Earth. It is non-luminous objects. That is, it does not have its own light. It only reflects a part of sunlight it receives from the sun. So it just reflects the light of the sun. It does not have its own light. And then we have discussed about the different phases of moons. So moon revolves around the earth in a definite path, that is orbit, and it takes nearly 28 days to complete one revolution around the earth. So how much time it takes to revolve around the earth? That is 28 days. And we all observe that every day shape and size of the moon appears to change gradually. So आपने देखा होगा मून जो है अपनी जो शेप है और साइज है वो चेंज होता रहता है उसका. And why this is so? This is because of the changes in the relative position of the earth and the moon with respect to sun. As you can see here in the picture कि कैसे जो मून है, मून के जो फेस है वो हमको नजर आता है. जब ये मून अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है, सो दैट मीन्स वो एग्जैक्टली बीच में आता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लूनर सोलर एक्लिप्स लग जाता है. बट ये एग्जैक्टली एक लाइन में नहीं होते हैं. सो यहाँ पर ये हमको क्या दिखता है, इसकी जो न्यू मून डे है मून नहीं दिखता है, बिकॉज इसका कोई भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. सो जैसे इसकी चेंज होती रहती है पोजीशंस, तो वो तो हमें थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका नजर आना शुरू हो जाता है. सो यू कैन सी हियर, जब ये यहाँ पर है ये थोड़ा सा मून का पार्ट हमको नजर आता है. जब यहाँ पर आता है ये ज़्यादा पार्ट नज़र आता है. यहाँ पर फुल मून डे हो जाता है, पूरा जो है वन साइड का फेस नज़र आता है, तो हमें ये पूरा गोल नज़र आता है. सिमिलरली फिर ये कम होता जाता है, और सिमिलरली अगेन इस तरह से ये इसका पूरा साइकिल चलता है. और ये डिफरेंट जो है फेजेस हैं मून्स के. सो दिस इज जब हमारा मून नज़र नहीं आता, दैट इज अ न्यू मून. एंड दिस इज फर्स्ट क्वार्टर फुल मून, यू नो, पूर्णिमा भी बोलते हैं हम इसे, जब हमें पूरा राउंड नजर आता है मून. एंड देन अगेन द थर्ड क्वार्टर. सो the different appearances of moon on different days are known as the phases of moon. These phases includes complete dark phase, that is अमावस और new moon day, तो इसको हम अमावस भी बोलते हैं. complete bright phase, this is पूर्णिमा और full moon day. And these two phases of moon are separated by nearly 15 days. और ये दोनों phases में कितना different होता है, separate होते हैं. नियरली 15 डेज के बाद न्यू मून आ जाता है, और 15 डेज के बाद फुल मून आता है.
So this is all about the moon, the phases of moon, how it changes its shapes and size of the. Next is your artificial satellite. So what do you mean by artificial? Artificial means which is not natural, or you can say which is made by man. So there are some objects which are made by man and that revolves around the earth, right? So artificial satellites are man-made objects. It is not natural. It is made by man, which can be made to revolve around the earth. और ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है. And they are, however, much closer to the earth than the moon. Because ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, that's why it is called a satellite. But it is not natural. It is made by man, so it is called the artificial satellite. But it is much closer to earth than the moon. Artificial satellites perform various tasks. So जो ये artificial satellites होते हैं, इनके कुछ ये particular task जो है उसको perform करते हैं. इनको set करने का कुछ particular purpose होता है. They are used in communications for transmitting radio, telephone and television signals. So ये सैटेलाइट्स होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करते हैं. हमारे रेडियो, टेलीफोन एंड टेलीविजन जो सिग्नल्स होते हैं वो ये ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से आपको रेडियो भी सुनाई देता है. उसमें जो कहीं पर कोई बोल रहा होता है और आपको यहाँ पर सुनाई देता है. सिमिलरली टेलीफोन, मोबाइल्स के जो हैं वो सिग्नल्स कैसे वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते हैं. सिमिलरली टेलीविजन, आप सेम चैनल आप वर्ल्ड में कहीं भी देख सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दीज सैटेलाइट्स. एंड यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ सैटेलाइट. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिमोट सेंसिंग. सो नाउअडेज आपको वेदर भी पहले ही पता लग जाता है कि कब बारिश होने वाली है, किस दिन आपका क्लीन रहेगा, क्लियर हो जाएगा आपका, और किस दिन स्टॉर्म कब आने वाले हैं. जो आपके टॉर्नेडोज होते हैं और आपके डिफरेंट जो वेदर्स की फोरकास्टिंग है वो पहले ही आपको पता चल जाती है. सो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. And artificial satellites are also being used to collect information about the other planets and the stars. So जो satellites है ये बहुत यूजफुल हैं, ये हमारे बहुत डिफरेंट जो हैं काम आते हैं. ये हमारे लिए इंफॉर्मेशंस भी कलेक्ट करते हैं अदर प्लैनेट्स की और स्टार्स की. एंड इंडिया लॉन्च द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट in 1975. Very important GK question भी कह सकते हैं, and it is also a question, answer of one question. So India launched the first artificial satellite named Aryabhatta in 1975. So क्या नेम था हमारा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट का? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, that is Aryabhatta, and it is launched in 1975. And India has launched 74 satellites till date. So अब तो और भी ज़्यादा satellites launch हो चुके हैं because this is the old book. So India has launched 74 satellites till date of many types since the first attempt in 1975. Rohini, Apple, Insat, EOSat, Cartosat, IMS-1, Chandrayaan-1, GSAT-4, Jugnu, and Saral are some of the other Indian satellites. So these are the names of other Indian satellites, and the first artificial Indian satellite that was launched was Aryabhatta. ये आपको learn होना चाहिए, पता होना चाहिए. And do you know the satellites that now make it possible to have
a live view of an event in any part of the world are very special satellites. आप कोई किसी भी चीज का इवेंट का लाइव व्यू जो है वो कहीं भी देख सकते हैं, any part of the world, and they take as much time to complete one orbit around the earth as the time taken by earth to complete one rotation on its axis. So that means वो 24 hours में वो complete कर लेता है one revolution अर्थ का, because जितने टाइम में वन रोटेशन कंप्लीट करती है अर्थ उतने ही टाइम में वो उसका कंप्लीट जो वन राउंड है वो कंप्लीट कर लेता है. So scientists refer to them as geostationary satellites. So these types of satellites are called geostationary satellites. So we have completed the chapter, and in next video we will discuss the exercise and question answers of this lesson. Thank you.